Hello. Hello. Hi, Dhruv. How are you? Let me just also add it on Instagram that I'm live. Okay. Oh, Reels. So, do we have anyone here? Hi, abstract thinker. How are you? So, I was actually shooting my video for Venus transit in the nakshatra of Punarvasu. That is the so what I thought what I should do is hi Shruti, hi Harshit, hi Hema Chandra. So I thought what I should do is कि everyone has a thing कि आप मतलब वीनस को एक पर्टिकुलर नक्षत्र में तो वो क्यों नहीं आप पोस्ट करते हो तो आई थॉट व्हाई नॉट डू दैट सो आई हैव एक्चुअली बिकॉज आई वाज वेरी यू नो टाइट ऑन द स्केड्यूल सो आई थॉट कि पहले मैं बना देती हूँ थ्रू द ascendants what Venus in Punarvasu is going to do. So I've made that video. I'm going to post it by tonight. And one more video I'm going to post is कि Venus basically Punarvasu में करता क्या है. So what are the traits of your spouse and what nature it gives to you, what finances it gives to you, and everything like that. Okay, so now onwards, I'll start with Punarvasu Nakshatra and I'll post every week, all not every week, I would say, एक हफ्ता छोड़ के एक हफ्ता क्योंकि तभी नक्षत्र ट्रांजिट होता है तो कि वीनस जो भी नक्षत्र में है उसका डेफिनेशन ठीक है हेलो क्षितिज हेलो ईशांक हाय ध्रुव ओके सो वील गो दिस वे ओके अभी एक क्वेश्चन आ भी गया है Virgo ascendant, Dharakarka is Saturn, Kritika Nakshatra mein I'm hoping with Jupiter in Rohini in the ninth house. Okay, aspected by Sun. How will the wife? So first of all, जब भी Jupiter और Saturn का conjunction होता है ना, you have to sacrifice something. So first of all, since वो आपका seventh lord है, right, Jupiter, that means that there's going to be some sacrifice, some religious sacrifice that you have to make towards the marriage or because of the marriage. This also means that your partner is going to be very traditional in nature and very much on the morals क्योंकि ninth house में चला गया ना ninth house is about your morals it is about your higher learnings so सबसे पहले तो for you as your life nothing happens very easily because Jupiter Saturn है वो हमेशा आपको कोई ना कोई lesson देते हैं your marriage and your selection of partner is going to be very much influenced with your father also or there is going to be some guru who is going to suggest you with that राइट सो आपकी जो स्पाउस होंगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड होंगी होमली होगी एम्बिशियस होंगी फाइनेंशियल एडवांसमेंट चाहेंगी अपनी लाइफ में तो उसकी तरफ भी उनका काफ़ी ध्यान होगा एंड शी इज गोइंग टू बी वेरी गुड लुकिंग एंड प्रिटी लुकिंग ऑल्सो देन नेक्स्ट सो हेलो इलम ध्रुवल Venus and Mercury in the seventh house in Libra, and Moon in the first house in Aries in the D9. Okay, so seventh house में Libra में you are saying अच्छा ये दोनों D9 में placements है first of all this means a very friend like relationship with the partner so Venus और Moon जब भी आपस में साथ में होता है ना emotional connection बहुत ज़्यादा होता है marriage में any change in your marriage is going to lead to your peace of mind getting on another levels so these people are very connected emotionally with their partner they are very communicatively connected with the partner उनको हर चीज अपने पार्टनर को कम्युनिकेट करना है बट एक चीज जरूर है कि इट्स लाइक एक रिलेशनशिप ऐसा रहता है एक टग ऑफ वॉर रहता है कि दिन में लड़ाई फिर सॉल्व हो गई फिर से लड़ाई हो गई तो ये फ्लक्चुएशंस चलती रहेंगी बट ओवरऑल द स्ट्रेंथ ऑफ द मैरिज इज वेरी गुड एंड आफ्टर मैरिज देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ एडवांसमेंट विद योर financials also okay क्योंकि Venus seventh house में है that means that you are going to be surrounded by luxury in your life right and this also means that your mind is always going to be about either traveling having an adventure or dominating the marriage or just being involved into different activities with your partner जैसे always on a go always on an adventure right Okay, so next, Shruti,
wants to know, okay, you have written want to know about Saturn and Mars conjunction in the fifth house, Scorpio ascendant. So agar Scorpio ascendant hai fifth house mein, it is going to be in the sign of Pisces. So what happens is Saturn and Mars whenever it comes together, सबसे पहले वो टेक्निकल एजुकेशन देता है. दूसरी चीज फिफ्थ हाउस आपका इंटेलिजेंस है, वो आपके इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा. इफेक्ट किस वे में? अब मार्स है इम्पल्सिवनेस. मार्स इज ऑल्सो अ वेरी, इट इज एक्चुअली अ पर्सन जो कि हम मानते हैं जो क्लेवर भी है, ह्यूमैनिटेरियन भी है, बट वो अपना फायदा निकालना जानता है. मार्स ऐसा इंडिविजुअल होता है. सो मार्स इज ऑलवेज अ क्लेवर वन. मैं पर्सनली ये कंसिडर करती हूँ कि एक मर्करी वाले इंसान पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, एक मार्स वाले इंसान पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. तो जब मार्स फिफ्थ हाउस में आ जाता है ना, आपकी इंटेलिजेंस आपको बहुत से फायदे उठाने वाली चीजों की तरफ लेकर जाता है. बट व्हेन सैटर्न इज बीइंग कनेक्टेड देयर, वो मार्स को कंट्रोल करके रखता है. वो कहता है कि तुम इतना ज्यादा इधर उधर मत सोचो, तरीके से चलो. सो ऑलवेज यू विल हैव अ टग ऑफ वॉर गोइंग अराउंड इन योर हेड. बट डेफिनेटली दीज पीपल नो कि सीधी उंगली से घी कैसे निकालना है और टेढ़ी उंगली करके भी घी कैसे निकालना है. द अदर थिंग इज, which is actually the massive part which comes with this conjunction, is because it is in the sign of Pisces and it is in a water sign. Water sign में ये दोनों ही planets इतना अच्छा feel नहीं करते हैं. इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में बदलती है. सो यू विल सी दिस पर्सन मेजरली ऑन द क्वाइट साइड. ये ज्यादातर चुप रहेंगे चीजों को लेकर, बट दे हैव अ लॉट ऑफ रिवेंज दैट दे टेक on the inside. So they have many emotions which are clustered within their self, and they should definitely take that out either in the form of meditation or in the form of communication. Otherwise this can actually lead to depression for these individuals. And also ये education में technical education देता है, rather education में बहुत ज़्यादा highly qualified लोग होते हैं. दे कैन बी इनटू, आजकल जो बहुत ज्यादा टेक्निकल एजुकेशन चल रहा है ना, उसमें हो सकते हैं. एंड इट कैन बी स्पेशली इन टर्म्स ऑफ आईटी प्रोफेशन इनका मेजर रहता ही है. ओके, सो निशेठा Nanwani, you have a question. I have feelings for someone currently. Should I trust and go for it? And now I'm going to communicate this. मैं अभी recently I was making the video for Venus in punarvasu, जो कि आज रात को, आज क्या है 28th ना, तो 29th को सुबह 4 बजे ये ट्रांजिट हो जाएगा. So this was actually what I was talking about in the video, and I'm going to post it. So do look at it. तो इस वीडियो में यही बात मैं कर रही थी कि आद्रा की ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ना अब वो पुनर्वासु में जा रहा है वीनस. सो वीनस इज योर रिलेशनशिप्स. सो सिंस जितना टाइम पे वो जेमिनाई में रहेगा पुनर्वासु साइड में, दैट एक्चुअली मीन्स अबाउट कम्युनिकेशन. Many of you will actually feel the urge to nourish the other person with your communication of love. तो जो भी आपका रिलेशनशिप रियलाइजेशंस रही है ना अभी तक, जो भी आपका रिलेशनशिप्स रहे हैं अभी तक, वो सारे अब एक्चुअल में हील होने वाले हैं. और उन हीलिंग का फर्स्ट जो पॉइंट होगा, दैट इज गोइंग टू बी कम्युनिकेशन. सो इफ यू हैव फीलिंग्स फॉर समवन, यू शुड डेफिनेटली कम्युनिकेट. दिस इज एक्चुअली द टाइम फॉर यू टू कम्युनिकेट, क्योंकि इसके बाद पुष्या नक्षत्र में चला जाएगा. सो जुलाई इज अ गुड मंथ फॉर लव एनकाउंटर्स, right? Regardless of the nature of the whole year, because pura saal abhi shani ruled hai, so it's a difficult one, right? But still this July is actually going to be good. Next, oh, एकदम से सारे questions ऊपर चले जाते हैं. हेलो एकता जी, कैसे हैं आप? Okay, so where was I? Okay, so Harshit, ma'am, I have been stuck in my life from 2.5 years. I don't know what to do, what not to do. Going through Sun Mahadasha. I have Moon and Mars in the 10th house and Sun Mercury in the 12th house in Scorpio ascendant. So it's Scorpio ascendant, 12th house में debilitated Sun है. So I actually, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है व्हाट इज द सिचुएशन दैट व्हाई यू आर स्टक, बट डेफिनेटली अगर आपका मून और मार्स 10th में है ना, यू आर एक्चुअली रिक्वायर्ड टू टेक सम एक्शन टुवर्ड्स व्हाटएवर एंडेवर्स यू वांट टू डू.
अब ये मून और मार्स है, ये लियो में है, तो ये आपको बहुत लेजी विद योर एक्शंस भी बनाता है। अब या तो अगर आपको चॉइस ऑफ करियर में प्रॉब्लम दिखता है या चॉइस ऑफ करियर नहीं समझ आ रहा है, सो डेफिनेटली इट इज रिलेटेड टू समथिंग क्रिएटिव। सो कुछ भी आपके दिमाग में अभी है जो कि क्रिएटिव एंडेवर से रिलेटेड है, जस्ट गो फॉर इट। डेफिनेटली वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका चार्ट ओरिजिनली फेम ओरिएंटेड है, राइट। सो अगर तो करियर चॉइसेस स्टक फील कर रहे हो तो गो फॉर दिस। Although I can't just justify the exact career for you right now with this piece of information, but I do see कि महादशा भी ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि there is something you need to get out of, you know, आपका imagination यूज करके आपको कुछ करना पड़ेगा which is going to be a part of your career. So definitely go for it. और महादशा सन की है, सन मोस्टली करियर वाइज सपोर्टिव रहता है, रिलेशनशिप में रहे ना रहे करियर वाइज सपोर्टिव रहेगा, ठीक है। सो लेट्स जस्ट take some action because your Leo moon and Mars also in Leo, ये कहीं ना कहीं आपके actions को lazy बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट निजन लहरी, Taurus ascendant, Jupiter in the seventh house, seventh lord Mars is retrograde in Cancer. सबसे पहले retrograde Mars means it is going to intensify its situation. So जैसे Mars का मतलब होता है soldier, fighting. So Mars retrograde होता है, छोटी छोटी बातों पे फाइट करते हैं बट उतना करेज नहीं होता उस फाइट को लिंगर ऑन करने का। अब कैंसर में है, यू आर सेइंग राइट, सो यू आर अ टॉरस असेंडेंट, सो इट मीन्स इट इज इन द थर्ड हाउस, सो कहीं ना कहीं लैक ऑफ एफर्ट्स रहते हैं। and this also just is about the spouse also। तो जुपिटर सेवेंथ में है and it is in cancer, venus moon है नाइन्थ हाउस में उत्तराषाढ़ में। so your partner is first of all going to be from a distance, she is going to be a very homely person, but homely and a very emotional one also, an emotional person who cries very quickly, राइट। एंड दूसरी चीज ये है कि मैरिज थोड़ी सी हैवी हो सकती है फॉर यू बिकॉज यू वुड रिक्वायर टू प्रूव योर सेल्फ टूवर्ड्स द मैरिज, right? Your partner is going to be very educated and very knowledgeable individual and very helpful towards people also, but उनका ये नेचर कहीं ना थोड़ा सा आज के टाइम के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो थोड़ा सा डिफिकल्टी बना सकता है इन योर लाइफ ऑल्सो, ओके। बट डेफिनेटली या तो सोशल मीडिया से आपको आपकी वाइफ मिलेगी या तो कोई पर्सन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा विद इन योर इनकाउंटर विद योर स्पाउस, ओके। Okay, Kaptan, which D2 chart to be seen for wealth? Okay, so D2 हौरा चार्ट होता है जिसमें दो ascendancy होते हैं, या कैंसर या लियो। आपको वो वाला चार्ट यूज करना है, दैट इज द वन विच इज गोइंग टू टेल यू। इट्स एक्चुअली वेरी इजी टू रीड, आई हैव मेड अ वीडियो ऑन वेल्थ थ्रू एस्ट्रोलॉजी, द एनालिसिस ऑफ D2 चार्ट, आई थिंक यही है उसका नाम। सो जस्ट गो फॉर दैट पर्टिकुलर वीडियो and you will understand how do we analyze the D2 chart। बट D2 चार्ट में ना कभी कभार क्या होता है, मोस्ट एक्चुअली कुछ सॉफ्टवेयर में ना वो पहले ही प्रीफिक्स्ड होता है दैट देयर यू आर गोइंग टू हैव द मतलब जैसे D1 चार्ट होता है उसी तरीके से D2 चार्ट दिख रहा होता है, बट आपने उसको रेफर नहीं करना है, यू हैव टू चेंज इट टू द लियो एंड कैंसर असेंडेंस वन, एंड दैट इज द वन यू आर गोइंग टू रीड फ्रॉम। नेक्स्ट, okay, so next question, Rasika, seventh lord moon in the 10th house, your partner is going to be authoritative, very masculine in nature because of the Libra also। and you know Libra people का एक ना appearance का एक बहुत signature चीज होती है, उनका वेस्ट लाइन इज वेरी ब्रॉड। तो यूल सी जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनका वेस्ट लाइन ब्रॉड होता है और उनको जैसे लोअर्स अपने थोड़े से लो पहनने पड़ते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। बिकॉज अ लॉट ऑफ एनर्जी इन देयर बॉडी is actually accumulated around their waist area। Rahu in the seventh house in Cancer, so your partner is very emotional and also emotionally manipulative and very very clever। Vargotama Rahu in D9 in the fifth house।
Okay, so your partner is actually very soft individual, and since you are saying seventh house में Cancer है और Libra में है, okay, and that person is going to be excellent negotiator, excellent business person, very authoritative. आपको career के through भी वो इंसान मिल सकता है, ठीक है. करियर में भी काफी फ्लक्चुएशंस रहेंगी, बट करियर में कुछ क्रिएटिव एलिमेंट इन्वॉल्व जरूर होगा, राइट. सो नेक्स्ट, Pritesh, Scorpio ascendant, sixth house debilitated Saturn with Venus. सिक्स्थ हाउस में जब डिबिलिटेटेड सैटर्न होता है, सिक्स्थ हाउस में सैटर्न इज अ गुड प्लेसमेंट वैसे, बट अगर डिबिलिटेशन में हो जाए तो इंसान सैटर्न की जो वैल्यूज होती हैं, सैटर्न इज अ सर्विस ओरिएंटेड प्लैनेट और सिक्स्थ हाउस भी सर्विस ओरिएंटेड होता है. तो सैटर्न जब सिक्स्थ हाउस में आता है और वो डिबिलिटेशन में चला जाता है, यू वांट टू बी एट सर्विस बट एट योर ओन पर्पस, टू फुलफिल योर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट और योर पर्पस. सबसे पहले यू हैव टू बी केयरफुल विद हाउ यू इंटरैक्ट विद पीपल इन योर सराउंडिंग्स एंड स्पेशली एट योर वर्क, क्योंकि सिंस वो सैटर्न एंड वीनस है और एरी साइन में है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स देता है फीमेल्स के साथ. कहीं ना कहीं देयर आर सम डोमिनेशंस और सम रिफ्ट बिहेवियर विद फीमेल्स एट योर वर्क स्पेस. तो आपको थोड़ा सा वो ध्यान रखना पड़ेगा. दूसरी चीज कि ये रिलेशनशिप्स में भी ना, रिलेशनशिप्स ऑलमोस्ट 36th ईयर तक ना थोड़े ऐसे ही रहते हैं कि आपके अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स में एंड होते हैं रिलेशनशिप्स. सो ऑलवेज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद इन योर रिलेशनशिप्स. ये सैटर्न एंड वीनस आपको रिलेशनशिप एट अर्ली एज दे सकता है rather than the basic placement of Saturn और Venus, क्योंकि बेसिक प्लेसमेंट ऑफ Saturn एंड Venus मीन्स कि आपको रिलेशनशिप ही बहुत लेट मिलता है. क्यों? क्योंकि यू आर वेरी फेयरफुल ऑफ रिलेशनशिप्स. बट यहाँ पर सिंस सैटर्न इज इन द साइन ऑफ एरीज, यू आर fearful but you do not lack action towards taking towards a relationship. रादर अगर ये कोई और साइन में होता ना, जैसे केप्रिकॉन में होता है या एक्वेरियस में होता, तो शायद आप ना वो एक्शन भी बहुत क्विकली नहीं लेते towards a relationship. Okay, so these are the key factors for this placement. Next, okay, so Ish Malvi, Sun in Purva Falguni and Mercury in Magha. A very creative person and very good with mimicking. आपको पता है mimicking, I have seen Mercury very prominent with the imitators and also Purva Falguni का dominance, Magha का dominance, Leo का dominance in general. These people are excellent observers and excellent imitators. Okay, both in the seventh house. मतलब आपके spouse के traits ये होंगे. Venus and Rahu in Ashlesha, your partner can be very deceptive, very deceptive as in, अब मैं एक चीज ना, I don't know, I think that was a part of a consultation only when I was talking to someone. तो मैंने उनको बोला कि राहु का डिसेप्शन जो है ना, not just राहु, कुछ नक्षत्रास भी ऐसे होते हैं जो डिसेप्टिव होते हैं. अश्लेषा is one of them. तो उनका जो डिसेप्शन होता है ना, डिसेप्शन इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग इनफिडाइल, बीइंग इनटू चीटिंग. इट कैन बी चीटिंग इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. मे बी वो आपको, उनको आदत है बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलना. इसको भी हम एक तरीके से मानते हैं एज अ पार्ट ऑफ चीटिंग. इट्स जस्ट दैट थिंग इज नॉट ट्रांसपेरेंट इन फ्रंट ऑफ यू. इट जस्ट मीन्स दैट. सो वो डिसेप्शन है. डिसेप्शन किसी भी तरीके से आ सकता है. आपको कुछ पता होना चाहिए बट आपको नहीं पता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिसेप्शन, राइट? So looks of your spouse. So first of all, your spouse is going to be very good looking. Since Sun or Mercury है good looking भी, and she would ask for attention. A person who is very active maybe on social media. अब Venus और Rahu के conjunction in the sign of Cancer could be that she is also very secretive about her personal life, but definitely she wants people to admire her beauty. So she is going to be a person who is going to be very comfortable with getting clicked in different outfits or just to get clicked. उनको फोटोज खिंचवाना बड़ा अच्छा लगता है. उनका पेरेंट्स भी अच्छा होगा. Why do I have obsessions with heels? That is actually because of this placement, this Leo dominance. क्योंकि Leo में ना हर रॉयल चीज, हर ऊंची चीज अच्छी लगती है. चेयर्स भी आप कभी लेने जाओगे ना, आप हमेशा ऊंची चेयर्स को
प्रेफर करोगे? नेक्स्ट will be okay, Ravi Srivastav. Could be the combinations for RBI manager as D1 and D10? See, D10 ke combinations na is not the priority ones for a career for a person, but D1 के is तो dominance of Virgo और सैटर्न और सन का कंजंक्शन कहीं पे सैटर्न अगर सन के नक्षत्र में है, सन अगर सैटर्न के नक्षत्र में है, या दोनों का कहीं ना कहीं 11th 3rd या 5th हाउस से इन्फ्लुएंस है, कंजंक्शन है, 9th से है, 10th से है, इन हाउसेस से, then you can expect that, but it's actually a bigger process. आपको आत्मकार का देखना है, अमत्यकार का देखना है, सोल प्लैनेट देखना है, सोल प्लैनेट एज एन कि आपका क्वीन नंबर क्या है ड्यू टू अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, फिर आपको अपना भृगु पॉइंट देखना है कि वो 9th 11th 10th या 12th में होना चाहिए, 5th में भी हो सकता है, ठीक है. सो इट्स लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स यू नीड टू सी, बट ये जो मैंने सैटर्न और सन का बताया ना, ये देख लो, या डोमिनेंस ऑफ वर्गो देख लो, या डोमिनेंस ऑफ एरीज देख लो. ओके, how to how to interpret, I'm answering for Girisha. How to interpret this Parivartan yoga in D9 chart? Fifth lord Saturn is in the 7th house in Pisces, and 7th lord Jupiter retrograde is in the 5th house Capricorn. Also Venus is 7th house in Pisces. Acha, Venus is conjunct with Saturn. First of all, marriage life is not going to be very easy for you. ठीक है, राशि परिवर्तन योग है तो दैट इज गुड, ये आपको हेल्प ही करेगा, गलत नहीं करेगा. अब हेल्प कैसे करेगा? दैट इट इज गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स व्हिच a lone Saturn or a lone debilitated Jupiter would have given you. One thing is that there is going to be a lot of sacrifice that you will have to make towards the marriage, to be very honest. दूसरी चीज, there is going to be a lot of criticism that is going to come from the partner, and also कोई ऐसा आपकी लाइफ में एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट रहेगा 34 35 36 37, ये 4 years में एक बहुत लाइफ चेंजिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट रह सकता है, इन विच मैरिज इज गोइंग टू गेट इन्वॉल्व. मतलब मैरिज पार्टनर भी इन्वॉल्व होगा उस ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट में, ठीक है. बट ये राशि परिवर्तन योग जो है, ये कहीं ना कहीं सेवियर एक्ट करता है, ये कहीं ना कहीं उस ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट में कुछ फैक्टर पॉजिटिव भी रखेगा. ओके, नेक्स्ट आई वुड जस्ट टेक वन मोर chart. Okay, head hacker, I was just actually reading your comment. Thanks for that. Is July right time to go to dating events and travel for a blind date? Scorpio, ascendant, Mars, Moon, Mercury, Venus in Cancer. अच्छा, Scorpio के लिए I recently just did a prediction for Scorpios. I think that was about क्योंकि आपका ट्रांजिट होने वाला है 9th हाउस में, so it's like a very life lesson learning for in regards to relationships. So I think it's a good time. It's a good time to go for dating. July is good because Venus अच्छे नक्षत्र से भी पास होगा, and rather the relationship that you might have in the month of July can lead to a future stability. तो वो long term हो सकता है based on the transits. ठीक है, so definitely if you want to go for it, you should go for it. I'll just quickly answer one more question for Hitesh Baria. Saturn Venus conjunction aspected by Mars from the 8th house for Aries ascendant. अच्छा, Mars 8th house में है और उसका कौन सा aspect है? Saturn Venus कहाँ पे है? चलो, I'll just simply answer it. See, एस्पेक्ट्स का डिफरेंट मीनिंग होता है, तो डिपेंड करता है मार्स का कौन सा एस्पेक्ट है, बट आई विल आंसर फॉर सैटर्न वीनस. जब सैटर्न वीनस का कंजंक्शन होता है ना, दैट मीन्स दैट यू आर रिस्ट्रिक्टिव टुवर्ड्स रिलेशनशिप्स. क्यों? क्योंकि आप रिलेशनशिप्स को लेते हो बहुत सीरियस. आप किसी भी सैटर्न वाले पर्सन को देख लेना, 8 नंबर, जो 8 नंबर वाले होते हैं, जो 8 नंबर पे बॉर्न होते हैं, 8 आई थिंक 17, not I think, it's 17 and 26.
जो इन एजेस में इन डेट्स पे बॉर्न होते हैं ना, या फिर जो उनका सपोज असेंडेंट में सैटर्न है या सैटर्न रूल्ड मून है, यू विल सी दीज पीपल व्हेन दे आर इन अ रिलेशनशिप दे विल क्लिंग ऑन यू। वैसे ना ये पूरा फॉर्मल रहते हैं, वैसे पूरा डिस्टेंस रखते हैं, पर अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में है या आपके साथ उनका कुछ एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, चाहे वो आपके फादर ही क्यों ना हो, मदर ही क्यों ना हो, चाहे वो रोमांटिक रिलेशन क्यों ना हो, चाहे वो मैरिज क्यों ना हो, दे आर गोइंग टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर यू। तो इसीलिए ना ये लोग पहले ना अपनी बाउंड्रीज रखते हैं, दे लेट यू जस्ट प्रूव योर सेल्फ टू एंटर दोज बाउंड्रीज, बट वंस यू एंटर देम ना, चाहे आप अच्छे हो चाहे आप बुरे हो, दे आर गोइंग टू डू एवरीथिंग फॉर यू। सो दैट्स वाई ऑन द इनिशियल सेंस ये एक फियर देता है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। एंड ये इसीलिए भी आता है बिकॉज रिलेशनशिप से आपको वैसे भी बहुत ना ऐसी सिचुएशंस आती है दैट पीपल ट्राई टू क्रिटिसाइज यू अ लॉट मेनी टाइम्स। तो वो क्रिटिसिज्म जो आता है ना, वो क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं आपके बहुत ज्यादा अंदर तक घर कर जाता है। So that's why this Saturn and Venus can prove to be a little bit of difficult on relationships, but definitely ये बहुत excellent negotiators होते हैं, ये career में बहुत अच्छा काम करते हैं, they know how to operate with money and they also know how to thrive in their career because ये hard workers होते हैं। And since Saturn is conjunct with the natural lord of the second house and natural lord of the seventh house, ये कभी पीछे नहीं हटते हैं, ना ही इनकम के टूवर्ड्स काम करने के लिए, मनी के टूवर्ड्स काम करने के लिए, ना ही रिलेशनशिप्स के टूवर्ड्स काम करने के लिए। सो दे आर good people to be with, but you just have to have an understanding towards them and you need to have a lot of patience towards them. Okay, guys. So this was the live session. I might come live again in the weekend. Kal hi hai actually, Saturday, Sunday. So I'll come on either on them. So you can follow me on Instagram because I'm going to post about the time that I come live on the Instagram only. Okay. So we'll see you next time. Bye bye. Take care and do look for the Saturn retrograde video. I've recently posted it and it has a lot of predictions that is going to happen for these 139 days. और वो 30th of June को होने वाला है ट्रांजिट, एंड अभी 29th को लाइक कल मैंने बताया वीनस का ट्रांजिट होने वाला है। सो जस्ट गो ओवर दैट एंड लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।